Hello class, today we will see next chapter dispersion means standard deviation. In this standard deviation the first point is dispersion. Now what is meant by the dispersion? Dispersion means in order to estimate what extent the data vary from the average to the measure of spread of the scattered data, we compute the measure of dispersion. हम क्या करते हैं कि हमें डाटा क्या हो जाता है, vary from average to measure of the spread of scattered data. It is called as the dispersion. These are some desired data. Desired data of good measure of dispersion. Desired data means क्या है कि उसके क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए. तो first it should be rigidly defined. Second is based on all observation. Third one is easy to calculate. Easy to understand. Next one is capable for further algebraic treatment. Capable for further algebraic treatment. Next one is affected by sampling fluctuation. And these are some desired data कि कैसा होना चाहिए आपका ये dispersion, that it is rigidly defined based on all observation, easy to understand and easy to calculate. Okay, it should be capable for further algebraic treatment. It should not be much affected by the sampling fluctuation. Now there are four measures of the dispersion. Okay, measure of dispersion. कौन से मेजर्स हैं कि हम कैसे डिस्पर्शन मेजर करते हैं. फर्स्ट वन इज रेंज. सेकंड वन इज क्वार्टाइल डेविएशन. Third one is mean deviation. And last one is standard deviation. Last one is a standard deviation. ये चार क्या है, मेजर ऑफ द डिस्पर्शन है. देखो यहाँ पे कैसे है कि डिस्पर्शन क्या दिखाता है कि एस्टिमेशन ऑफ द डाटा कि वो वैरी हो रहा है आपके एवरेज से और वो मेजर ऑफ स्प्रेड से कितना वैरी हो रहा है
वो क्या दिखाता है, डिस्पर्शन है। तो उसके कितने मेजर्स है, दैट 4 मेजर्स। फर्स्ट इज रेंज, सेकंड इज क्वार्टाइल, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फर्स्ट वी सी व्हाट इज मीन बाय द रेंज। रेंज क्या होती है वो फर्स्ट हम देखेंगे। First is range. What is meant by the range? An elementary measure of dispersion is range. Range क्या होती है देखो, it is an elementary measure of the dispersion. Okay, so how we find out the range? Range is the difference in between highest and lowest value taken by the variable x. Highest value minus lowest value. Okay, range is equals to this. Formula for range क्या है कि xn minus x1 और what is the coefficient of range, दोनों अलग अलग है। रेंज का फॉर्मूला अलग है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू xn माइनस x1 डिवाइडेड बाय xn प्लस x1। फॉर्मूला देखो, दोनों का भी फॉर्मूला डिफरेंट है। ओके, व्हाट इज रेंज? रेंज क्या है आपका, एलिमेंट्री मेजर ऑफ द डिस्पर्शन। हाउ वी कैलकुलेट रेंज? दैट हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू xn माइनस xn प्लस 1। इफ वी सी सम एग्जांपल ऑन दिस, एग्जाम्पल देती हूँ मैं। That calculate the range. Calculate the range for the following data. Giving daily sales of the shops for a week. तो सेल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है इन रुपीज में दिया है सेल्स 160, 130, 125, 127, 143, 150 एंड 155। ओके, हमें ये सेल्स दिए गए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज मीन बाय द रेंज? xn माइनस x1। xn क्या रहती है, हाईएस्ट वैल्यू। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा क्या है, x160। ओके, माइनस
What is the lowest value? Lowest value is 125. तो रेंज कितनी हो गई? रेंज इज हियर 35. रेंज इज इक्वल्स टू 35. अगर हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज is equals to xn minus x1 divided by xn plus x1. xn कितना है आपका? 160 है. x1 कितना है? 125 है. अगेन 160 प्लस 125. आंसर क्या आएगा? 35 डिवाइडेड बाय 285. कैलकुलेट करना है पॉइंट में, कैलसी पे कैलकुलेट करो. इट विल बिकम 0.12. ओके, इट विल बिकम 0.12. ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द आंसर. ओके, यहाँ पे देखो कैलकुलेट रेंज कैसे कैलकुलेट की. हाईएस्ट लो, हाईएस्ट में से सबसे लोएस्ट कौन सा था? ये था हमारा हाईएस्ट, ये था हमारा लोएस्ट वैल्यू. ओके, हाईएस्ट में से लोएस्ट को अगर आपने माइनस किया, ये है आपका हाईएस्ट, ये है आपकी लोएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करो, यू विल गेट द रेंज. ओके, सो दिस इज अबाउट द रेंज. नेक्स्ट पॉइंट ये लेते हैं. व्हाट आर द मेरिट्स एंड demerits of the range? What are the merits and demerits of the range? फर्स्ट हम लिखेंगे मेरिट ऑफ द रेंज. What are the merits of the range? First, easy to calculate. Second है easy to understand. भी इसके इतने मेरिट्स है, पर डीमेरिट्स देखो क्या क्या है. डीमेरिट ऑफ रेंज, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. इसमें सभी ऑब्जर्वेशन आए क्या? नहीं. नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. खाली हमने क्या किया? फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन ही कंसिडर किया. डज नॉट हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी. इसमें क्या नहीं रहता है? डज नॉट हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी. मतलब एक भी वैल्यू चेंज हो गई ना, तो ये पूरा क्या हो जाती है? रेंज चेंज हो जाती है. ओके, एज अमाउंट ऑफ द डाटा increases, range become less unsatisfactory. क्या हो जाता है? जितना आपका अमाउंट ऑफ डाटा बढ़ जाता है ना, उतनी आपकी रेंज क्या हो जाती है?
लेस सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है। मतलब यहाँ पर आपका सपोज 1 से स्टार्ट हो गया और 10 लाख तक गया, तो ये जो आपका सब्सट्रैक्शन है ना, इट डजंट मीन एनीथिंग, मतलब उसका निकालने का कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा इसमें हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वार्टाइल और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय द क्वार्टाइल, व्हाट इज मीन बाय द सेमी इंटरक्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन, और इसे और कहते हैं सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन। सॉरी, डेविएशन की जगह आप इसे रेंज बोलते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन क्या रहता है, अभी देखो, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है आपका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है, यहाँ पे जो Q3 है, Q3 इज अ थर्ड क्वार्टाइल, हमने लास्ट टाइम भी लिया था क्वार्टाइल कैसे करते हैं, एंड Q1 इज अ फर्स्ट क्वार्टाइल। ओके, और इंटर क्वार्टाइल क्या आ जाता है आपका, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या रहती है, Q3 माइनस Q1। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, इंटर क्वार्टाइल ये है, एंड क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो आपका ये आ जाता है। ओके, नाउ वन मोर, ये है आपका कि कोएफिशिएंट ऑफ quartile deviation is equals to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q2. These are the formula for coefficient of quartile deviation. ओके, सो ये जो सभी फॉर्मूलाज हैं ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। सो वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। This is your quartile deviation and interquartile deviation. Okay. Thank you.